let others join, and we'll continue. Why others are not joining? Okay, no problem. We'll continue. So, uh, as you can see here, since we are trying to open a file for reading which doesn't exist, so it is causing this error, file not found error, right? So this is an exception. So what is an exception? That is a runtime error which can be handled by a programmer. So when you want to handle exceptions, what you will do? The block which may cause an exception should be put inside a try block, right? So let us put all of this into a try block, and then we will write file not found error. Here we'll write printf, print file doesn't exist, and I'll write the name of the file as well. Yes, or we can write it here only, sample1.txt. Let's run it. So it is saying file doesn't exist. Now what we have done through this mode, we have handled the exception, right? More on exception handling we'll discuss a little later. Clear है बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Any doubt in whatever we have discussed till now about files? फाइल से रिलेटेड कोई भी चीज ऐसी जो No, आपको समझ में ना आई हो. We'll no, sir. continue with files tomorrow also. But आज जो किया है उसमें कहीं प्रॉब्लम है तो बताओ. No, sir. Okay, fine. I'll share the video. सर सर एक वन डाउट है जो हमारी कल असाइनमेंट आपकी आवाज नहीं आ रही नितिन. सर जो कल असाइनमेंट सबमिट करनी है हमने उसमें एक प्रोग्राम का डाउट है सर. बोलो. सर वो सुदुके वाला जो प्रोग्राम करना था हमने. कौन सा? सुदुके सर सुदुकू तो असाइनमेंट लैब असाइनमेंट हुआ है. बच्चे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही. जो लैब असाइनमेंट दी थी उनकी बात कर रहे हो? यस सर. कौन सा प्रोग्राम बोलो, नंबर बोलो. सर इस सर शायद सर 21. हाँ, क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें बोलो. सर समझ नहीं आ रहा अभी कैसे करना है ये प्रोग्राम. नहीं, आपको सुडोकू का मालूम है? हाँ जी सर वो गेम होती है. हाँ, तो हाँ कैसे जी चेक करते हो? सपोज कोई आपके पास सोल्यूशन है, सोल्यूशन आपके पास गिवन है, ओके. आपने ये चेक करना है कि वो वैलिड है या नहीं है. कैसे होता है? सुडोकू के रूल्स मालूम है सबको? नो सर. सर प्रॉपरली नहीं मालूम. नहीं नहीं, उसके तो सिंपल सा रूल है. ये लेट मी चेक इफ आई हैव एनी सुडोकू हियर, और लेट अस ओपन इट ऑन इंटरनेट. लाइक हियर कोई सैंपल यहाँ पे है जो बना, ये रहा. Okay, you can see here, this is a 9 by 9 matrix divided into 9 grids, where each grid is 3 by 3. Clear है जी? यस सर. तो इसमें सिंपल रूल है, every row and every column should have 1 to 9 numbers without repetition. एक तो ये बात हो गई. यस सर. Okay, I repeat,
every row and every column should have numbers from 1 to 9 without any repetition, right? Yes, एक ही sir. रो में एक नंबर रिपीट नहीं होगा, एक ही कॉलम में एक नंबर रिपीट नहीं होगा. Similarly, within the 3 by 3 column, which is again of size 9, उसमें भी 1 to 9 numbers होंगे and without any repetition. This is the simple logic, very very simple logic. Okay, sir. Clear है ये? जैसे ये एक solved है, here it is, ये एक solved example है, right? You can use it or anything else. इसमें आप check करोगे, like in this grid, 3 by 3 grid, 1 to 9 numbers हैं, कोई भी repeat नहीं हो रहा. Every grid, every 3 by 3 grid, and at the same time, every column has 1 to 9 numbers without repetition. Every row has 1 to 9 numbers without repetition. This is the rule. So you have to apply it on. You have to apply. You have to check whether a given solution is valid or not. आपने सिर्फ repetitions ही check करनी है. Clear है Okay, बच्चे? sir. Yes, sir. Okay. Okay, that's all for today. We'll have class tomorrow at 3. Okay. We'll continue with 5 tomorrow. Okay, sir.